चीन अपनी नाकाब चालों को चलने से बाज नहीं आ रहा है। भारत के विरोध के बावजूद चीन की संसद ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र पर बांध बनाने संबंधी 14वीं पंचवर्षीय योजना को गुरुवार को मंजूरी दे दी। चीनी संसद ने अरबों डॉलर की लागत वाली परियोजनाओं संबंधी 14वीं पंचवर्षीय योजना को मंजूरी दी। ड्रैगन ने इस पंचवर्षीय योजना में अरुणाचल प्रदेश की सीमा के निकट तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर विवादास्पद जल विद्युत परियोजना भी शामिल है, जिस पर भारत ने चिंता जताई है। सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार चीन की शीर्ष विधायिका नेशनल पीपुल्स कांग्रेस ने 6 दिवसीय सत्र के अंतिम दिन गुरुवार को राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए 14वीं पंचवर्षीय योजना को मंजूरी दी। इस बीच भारत सरकार ने चीनी अधिकारियों को अपनी चिंताओं से अवगत कराया है। भारत ने चीन से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि उसकी किसी भी गतिविधि से उसके हितों को नुकसान न पहुंचे। उधर प्रवासी भारतीय असम संतान पर्यावरणविद डॉक्टर आरती बरुआ ने भारत सरकार से संदर्भ में ठोस कदम उठाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि चीन के इस नीति के खिलाफ भारत पेरिस पर्यावरण समझौते के तहत इसके खिलाफ अपील कर सकता है या फिर भारत इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में उठा सकता है। Actually, all the rest of the world knows about it, and they were very kind of shocked that India doesn't say much. And it's just such a bad thing, and with the climate change and everything. And for India, I don't know why can be so complacent, because South rivers are not glacial rivers. They would never be. Brahmaputra, the Ganges, the rivers that comes from front of the Himalaya, that Ganges, all the tributaries, and the Gomukhi Glacier is almost half dry or more dry. And then the Yarlung Shangpo comes from the middle, just behind the Himalaya. And that's a very strange, and how it bends and what happening. There are lots of theories, but China didn't care. They basically did some, actually there were not enough papers on that before. Now there are plethora of papers, but all the papers were what is where they are more on the minerals, where to looking for gases, natural gas and all that kind of stuff. So basically we should go to Paris Climate Agreement too and say that let's at least a mega dam should not be happen, and when the other countries are also concerned, they should be penalized right away, or they should be, had to have discussion. That can be done because it's dead to whole Southeast Asia eventually. And the other thing is that we can go to United Nations, and people are very, very on the nature side nowadays. So. मौके पर डॉक्टर आरती बरुआ ने कहा कि चीन के इस बांध के निर्माण से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और बांग्लादेश पर खासा प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मानसून के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम जैसे राज्यों में बाढ़ की स्थिति बिगड़ सकती है। वहीं गर्मी के मौसम में नदी में सूखने की संभावना बढ़ जाती है। What is diverting means? You don't need to even divert. Think about this. This big bend also is a big, very big, deep well. And so it's already a well with the 3 sides. The weight coming out for about a mile deep end, and then you just close one end. And so how much cubic feet of water it'll hold? So what will happen that in the monsoon time, and all the snow will melt, and at the same time they will have more water, so they will release water. And then winter, it's such a big area of things that there will be not enough to fill that up, so there will be no water coming out. Who cares it will run up the river or not? They said, once filled up, it will be very hard to fill it up in the winter. It just shouldn't happen. It is the death to all these places, mainly to the Assam, because see, we call Brahmaputra when 3 rivers meet. And Lohit and Dibang only gave barely 5% water. And Lohit also maybe 9%, and the rest come from Siang. Now Siang, if the water doesn't come through Siang, then it just will cut off. And then further down, Subansiri
joints, but that not be enough water. And so on the top, first thing, it'll be just drying out at that, and then whole mechanism will stop and whole the ecosystem will be totally messed up. And then it won't make up for it. It won't be one river. I mean, that I can speculate or I can simulate how that happened, and I understand.